ये है कलकत्ता की सबसे खूबसूरत लड़की रुक्मिणी मैत्रा और मैं हूँ विद्युत जामवाल. The world's fittest man. But please watch our movie Sanak on the 15th of October on Disney Plus Hotstar. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा. और इस वक्त मेरे साथ सनक फिल्म के कमाल के एक्टर्स हैं. मेरे साथ रुक्मिणी है एंड एक्शन सुपरस्टार विद्युत. यू नो, सबसे पहले तो गाइस, जो ट्रेलर ने रिएक्शंस, मतलब जस्ट रिलीज हुआ है और जो रिएक्शंस आए, जो व्यूज आए, बहुत कमाल के आए. लेट मी टेल यू कि ये पिछले पूरे पैंडेमिक में जितने भी ट्रेलर्स आए उसमें बहुत कम ऐसे ट्रेलर्स थे जो लोगों को पसंद आए, एंड दिस इज वन ऑफ देम. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपके पास रिएक्शंस क्या है, फीडबैक्स क्या है? I think the reactions have been fantastic, touched wood by God's grace. And somehow when we saw the trailer, हम लोगों ने जब देखी तब हम लोगों को लगा भी था, कहीं आपको वो इंट्यूशन होता है ना कि ये कुछ सही बना है, you know, it's going to have a good reaction. People are going to like it because they were expecting action, but the kind of level that he has managed to surpass. No, I like the V bit, it's nice. He is good, I like it. No, but yeah, of course, we are also looking great together. And as a trailer, as a wholesome, I think, offering to the audience, I think it's very engaging, it's very intriguing. I think Chandan is also great in the film. I think he's really looking fantastic in it, and so does Neena. As a total package, it's really appealed to the masses. I've got a lot of calls, both from, I mean, of course, we see everything on social media, but barring that, I think even media back home in Bengal, they've also called me up personally saying that this is not because you're a part of it. I think Sanak as a film, this is something you're waiting to watch. So we're all eagerly awaiting for 15th of October to happen and for Sanak to happen. So I think that itself is a very, you know, it reinstills faith in the fact that you've made something good. Nice. With you? So with me, everything that she said, apart from that, I think it's a matter of great pride. I've been getting reactions from all over the world, but for me, so many people from Calcutta, I have a lot of Jamwalians in Calcutta, and they are very excited about it. They're like so excited, and I feel very proud कि बंगाल से एक अपनी शेरनी आई है. So it's a great feeling to be able to work with somebody who's beautiful, talented, and has a great nature with everybody. So I like that. So it's been good. तो यू नो, ट्रेलर में देख के जो एक्शन दिखाया गया, अगेन आपके फैंस तो दे आर गोइंग टू हैव अ ट्रीट. और हर बार हम ये जब बात करते हैं, आप हर बार फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस तो रखते ही हैं, लेकिन एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो यू ट्राई टू ऐड एवरी टाइम. तो इस बार क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस फैंस से यही आया था, प्लीज आस्क हिम व्हाट्स द नेक्स्ट वन. सो यार, जैसे हर बार अलग कुछ करना तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि आई एम आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच मी. जब मैं छोटा था और मैं कभी ब्रूस ली को देखता था, जैकी चैन को देखता था, because I'm quite an observer of action and a lot of things, मैं सोचता था कि आई होप अगली बार वो ना करे. सो मैं हर बार वही करता हूँ कि कुछ रिपीट नहीं करता हूँ. A lot of things are different, new. हमने रोजमर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल किया है फाइट करने के लिए. मैं अक्सर बोलता हूँ कि you don't need to have a weapon, body is a weapon. So वो सब का इस्तेमाल किया. It's quite cool. रुक्मिणी, आपने बंगाली फिल्म में काम किया है, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब ये फिल्म, इस फिल्म के लिए आपको अप्रोच किया गया था, कहीं पे कोई झिझक थी कि विद्युत के साथ एक्शन करना पड़ेगा? वो सब तो ठीक है, एक्टिंग करनी है, एक्शन करना. हाँ, बिकॉज मैचअप टू हिज लेवल इज समथिंग थोड़ा सा ये इज बियॉन्ड सुपर ह्यूमन लेवल. लेट्स नॉट इवन गेट देयर. यहाँ पे बैठ के मैं झूठ बोला, हाँ ऑफ कोर्स मैं तो आई ट्रेन लाइक विद्युत जामवाल बोल के तो कोई फायदा है नहीं. कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता. दैट इज फॉर श्योर. मगर ये पहली एक्टर है, मेरी को एक्टर, जिसने मुझे पटका है. ओह, दैट. So उसके लिए मैंने सोचा था, and that is there, and that has happened. And of course I've done my own stunt that way. Yes, but yes, he really takes care of his co-stars. Like he's very particular. He's like, you don't worry कि मुझे लगेगी क्या होगा. You be careful about you're not hurt. I think that is a brilliant thing. That's very comforting. You know, you feel relaxed. But having said that, I think when Vidyut's name was on board, of course, yeah, you want to pull up your socks. You want to be like, it's an action extravaganza, and Vidyut's there, and we've all seen his work. And so yeah, I'm like, listen, I called up my team back home, and I said, listen, I've never worked out a day in my life. I eat like a glutton. We need to do something. I need something. फिर क्या सब नाम है, strengthening core, plans, blah 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 blah. I said ये सब क्या है? Then my friends asked me, what are you training for? What are you doing? I said मुझे कुछ नहीं समझ में आता है. सब बोलते हैं weight training, ये training, वो training होते हैं. I said मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, but one thing I know, I'm not training like Vidyut Jammwal. That is
going to happen once I reach Bombay. But no, it was very nice. You know, I think it was very smooth working with him. Whenever everybody asked me, I think he's so easygoing. He's so chilled out. He's a no nonsense person. He's one of those people who's very open to opinions, which doesn't come from, you know, which is usually not the order of the day when it comes from somebody who's very established. At times they do come with a lot of baggage. We can't deny that. He didn't come with anything. Rather, there were scenes where I was telling him, you know, do you want to try it a little differently? Because you don't know the person to begin with. And the minute we were on set, we were doing very intense scenes from the very first day. So, you know, we were discussing it continuously, and I was like, are you sure? Like, you know, do you want to try? He's like, yeah, go ahead. And I think when you're a co-actor, more than an action star, as an actor, when you perform, you have that banter, you have that comfort. I think something beautiful, something magical works on celluloid. And anyway, we are all selling the biggest lie on celluloid. And if you can do that with conviction, which I hope we have, I think, yeah. Is that we are selling the biggest lie on celluloid? Of course, no. Because at the end of the day, we're all. You really want to? Yeah, because you know what is cinema at the end of the day? We're selling dreams, we're selling hope, we're selling dreams, which actually do not exist. I have to be in love with him. I have to be. He has to. So you know, we're showing them dreams which may or may not emerge into anything. It's probably just a futile effort at the end of the day. But we have to have that conviction that yes, we are in love, we are married. At the end of the day, Sanak, it's an action-packed film, but he's doing it at the end of the day for love, which is for me. He needs to have that. He cannot be like, मैं मेरी सनक के दूसरे की पड़ोसी की बीवी के लिए ना, अपनी बीवी के लिए ना. So that's what. But I think the chemistry works, and it's been a great. It is visible. It is visible. So Vidyut, the trailer reminds us of the old school action, you know, जो बहुत टाइम से मिसिंग हो गया था. Pretentious action फिल्में बन रही थी recent टाइम से. I'm talking of internationally also, but this one reminds you of Die Hard, Siege, और वो एक पूरा जिसमें emotion भी है और साथ में इतना सारा action है. तो क्या ये thought process था while doing this film? So yeah, with the Commando franchise, what we've done is हम लोग extraordinary human ability का display करते हैं. And with Sanak, I had to think a lot before we did the action. मैं चाहता था कि एक कॉमन आदमी है, एक नॉर्मल रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट है, अगर उसको लड़ना पड़े तो जरूरी तो नहीं है कि किक्स एंड पंचेस ही मारेगा, आप वो रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करेगा. सो दैट वाज नंबर वन इन द हेड दैट इट हैज टू बी डन इन अ वे दैट वी नॉट वॉच समथिंग. एंड बिकॉज मैं जब देखता हूँ आज के जमाने में सब कुछ, बिकॉज ईदर दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टंट डबल्स व्हिच इज फाइन, एंड दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. Science has taken over. So the human ability has taken a backseat, and I don't want that to happen because I enjoy the reality of the physical ability. But I'm sorry, I'm just getting it. I've watched him on set. He does it all by himself, and he's so fast. He's just so fast. I mean, he's like he's exactly what his name is. Like he's lightning fast. I'm like, this is I'm gonna blink, and he's probably done 10 moves in, and maybe 20. So he's like. Push. But it's a treat to watch. For the fans also, it's a treat to watch it. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम हॉलीवुड में भी देखेंगे तो बहुत सारी जो नेक्स्ट फिल्म है नाउ, बिकॉज पैंडेमिक में बहुत सारे लोग एक डिप्रेशन दौर से गए, दे वांट टू सी समथिंग बिग एक्शन मूवीज आर बीइंग प्लान्ड. जितनी भी अभी फिल्में आ रही है वापस वो चीज़ जो पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा है, डिफरेंट टाइप की. तो आपको लग रहा है कि दिस इज द राइट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू स्टार्ट दैट थिंग इन बॉलीवुड? No, I can't predict that for sure. But let's see, wait and watch what happens. We can't predict that this is the first. Let the audience decide it. And I genuinely believe that the audience is the best judge of everything we do. आपके दोस्त आपको कुछ भी बोल सकते हैं. जैसे उन्होंने शुरू में बोला कि people have called her up and congratulated her. वो तो है ही है. वो लोग पसंद करते हैं. मैं इनका Twitter देख रहा था. It went crazy. People were like, I was very like, wow, इतने लोग इसको प्यार करते हैं. वो तो है. बट जो दुनिया है, जो दर्शक हैं यार, वो अमेजिंग है. If they say it's not good, it's not good. There's nobody else who can validate it better than these guys. तो आपको जब आपने साइन की वो तो ठीक है, तो फर्स्ट फिल्म जो आपने विद्युत की देखी थी तो उस वक्त क्या रिएक्शंस था? कौन सी थी फिल्म तुमने जो देखी है? हाँ, कौन सी देखी थी पहले? So the movie at length that I've actually watched, Vidyut's film, was Khuda Hafiz, fully. And I mean that because we were, and I have to say that a lot of movies were happening on OTT. Of course, we all know of the Commando franchise and everything. But to be very honest, I hadn't watched his work. But yeah, there's a very iconic poster of him which we've seen during Force.
Then the Commando series was huge. I think your first co-actor in the Commando film, she had won Miss India from Bengal, the Miss India East. Really? Pooja Chopra? Yes. She had contested from somewhere, one of the districts or something. I remember because I was there, a part of that show. So no, we knew of the Commando franchise, which everybody. तो तुमने देखी क्यों नहीं? तुम्हारे शहर से कोई लड़की मिस इंडिया जीती है, तुमने देखी क्यों नहीं Commando 1? तब नहीं पसंद थे, अब काफी पसंद है। वो लड़की के लिए तो देख ले, तो कलकत्ता की लड़की थी। नहीं, वो कलकत्ता की नहीं थी। No, she won from there, I'm joking. No, but Khuda Hafiz was his first work which I had seen. खुदा हाफिज से बात करेंगे। And this was before Sanak happened. Okay. And also there is a little trivia that I got a call when I started doing movies for Commando 2 or 3. Somebody had called me, and I had actually even met Vipul sir during that time. And we had lost, kind of forget it. And then it happened to be that one of the most favorite films I enjoyed watching a film was Khuda Hafiz during the pandemic, because a lot of movies were coming out, and uske beech mein I think it was one of the highest rated as well, because I remember. So it was very good. And then I'm looking forward to only Sanak. तो ये खुदा हाफिज की वही वाली बात थी कि बहुत लोगों को फिल्म पसंद आई, कि पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि वो एक दौर था, शुरुआती दौर था, बहुत सारी फिल्में आ रही थी, सडनली दिस फिल्म केम एंड पीपल लव्ड इट, हाईएस्ट रेटिंग्स आए, लोग अभी भी देख रहे हैं। कुछ बताइए इसके बारे Yeah, to break the star system in India is one of the most difficult things. हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, आपको थिएटर की डेट्स नहीं मिलती हैं, और अगर आपको मिल रही होती हैं, so push and push, people remove you from those dates. It happens to everybody. It has happened to the biggest of the biggest. So for me, जब खुदा हाफिज इतनी बड़ी हिट हुई है Disney Plus Hotstar पे, for me it was a belief that I always knew that the nation loves me. मुझे पता था कि हिंदुस्तान का हर आदमी जो जितनी मैं कला दिखाता हूँ उसकी तो सराहना करते ही हैं. So for me it was a great validation, and that gave me a lot of confidence. बट इसमें आपने गैस सिलेंडर को जो यूज किया है, जो आपके गोइंग बैक टू योर 2019 के इंस्टा पोस्ट, जब आपने पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि भाई ये करके दिखाओ, किसी ने किया? नहीं, बहुत लोगों ने किया यार, और बहुत इंडस्ट्री में से किया। मतलब उसके लिए तो थोड़ी लाइक आई हैवंट वॉच्ड इट, बट वर्ल्ड वाइड आई गॉट वीडियोस फ्रॉम एवरीवेयर, लाइक माय गॉड, बहुत टैलेंट है दुनिया में यार। अच्छा, आप शाओलिन, कुछ फैंस के क्वेश्चन है, शाओलिन टेंपल गए थे 2013 में, तो उनके ये इच्छा है एवरी टाइम दे हैव बीन राइटिंग कि एक आउट एंड आउट मार्शल आर्ट्स वाली फिल्म में देखना चाहते हो। तो अभी भी ट्रेनिंग चल रही है कि यू आर रेडी फॉर दैट? नहीं, ये सवाल गलत है कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है कि नहीं, वो वाली बात होगी आप सांस ले रहे हैं कि नहीं। सांस तो लेना ही पड़ेगा सारे टाइम। इफ आई डोंट ट्रेन, हाउ विल आई इवॉल्व एज अ बीइंग मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली? और ये शाओलिन में इसलिए गया था क्योंकि बचपन से सुना है, जो एक बोधि धर्मा करके, देयर वाज अ मैन हु मूव्ड फ्रॉम इंडिया इनटू चाइना एंड ही स्टार्टेड द शाओलिन टेंपल। आफ्टर माय फर्स्ट मूवी रिलीज Commando 1, मुझे लगता था कि आई वांटेड टू गो एंड pay a homage to our Indian man जिसने पूरा Shaolin Temple शुरू किया है. So I stayed there. I enjoyed it a lot. This was in 2013. Yeah, this is the moment Commando 1 released and everybody realized कि कलरीपयट. मैं चाइना गया and there's a बोधि धर्मा का स्टैचू है. उन्होंने 8 साल एक दीवार के सामने मेडिटेट किया. He's the guy who started Zen philosophy. बहुत कम लोग जानते हैं. I didn't know that. Yeah, so I wanted to go and pay homage to him. So yeah. सवाल तो बहुत सारे, लेकिन एक जो अगेन मैक्सिमम ये है कि एक एक्शन सुपरस्टार होने के लिए आपको यू हैव टू कीप अपडेटेड विद द एंटायर वर्ल्ड में क्या एक्शन लेवल चल रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, अगेन चाइनीज फिल्मों में क्या है. हाउ डू यू बैलेंस एंड कीप वॉच ऑन ऑल दिस? I don't keep a balance. I just keep training. I don't watch much of action cinema to be inspired because I want to inspire myself. मुझे कुछ आइडिया होता है, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा, फिर मैं सोचता रहता हूँ कि होएगा कैसे. जैसे मैं अक्सर बता रहा था, अपने दोस्तों को बताता हूँ कि every time I'm in a car and I meet these youngsters, boys and girls, they tell me कि सर मैं गाड़ी की खिड़की के अंदर से इसमें घुसा हूँ. Well, listen, I have to say this. 1 second. Yeah. This is not about youngsters. My grandfather is his biggest fan. So when I told him I'm doing this movie, you would think youngsters, he's like 83 and he narrated this exact same scene to me. He's like, yeah, वो लड़का है ना, वो ऐसे गाड़ी में घुसता है ऐसे करके, वो विंडो के थ्रू से. मैं दीदार मीन्स माय, वी कॉल अपनी दादी जी को दीदार. क्या नाम है तुम्हारे दादी जी का? My Dadi ji's name is Ashoka. Ashoka Dadi ji, thank you, I love you. So my grandfather's like, yeah, you ऐसे ना जाके, this exact scene he narrates to me every time. I said, ठीक है दादू, one day I'll ask him to do it. I'll show you on video call. So, how not to get into a car. So normally, like जैसे इसका भी था यार, like when we I went on the set and it was a hospital setup. So they wanted to know कि क्या कर सकते हैं. I remember I was sitting on that ball
and we were thinking अच्छा वो अंदर आएगा तो we'll throw this dumbbell, okay cool, tick mark. Then I thought, why don't we use this ball? And then we spend a lot of time sitting on the ball. So I really enjoyed getting inspired by anything around me. I keep watching to see what I can use and what I can't. As I said, बहुत सारे सवाल है, but किसी और वक्त. So wish you guys all the best and really looking forward to watch this film क्योंकि मुझे पता है मजा आने वाला है. I'm sure audience को भी आएगा. Thank you so much. Thank you. Thank you for having us. Thank you.